Hello everyone. Good morning. I hope I'm audible, guys. Good morning. Right. So this is going to be our first lecture. Good morning. This is going to be our first lecture as far as ancient history is concerned. And over the next 15 or 16 lectures, our job will be to cover the entire syllabus in question and answer format. I'm sure that you must all be familiar with the way in which we conduct these classes. General pattern होता है कि in the beginning I present you with a set of questions, roughly 9 से 11 questions on average. मान के चलिए 10 क्वेश्चन रहेंगे हर दिन के, and through this we try to cover every aspect and every angle of the subtopic under review. So the topic for today, for example, is the sources of early Indian history, and this is just for reference, but I have also added in today's handouts a collection of the previous year's questions that have been asked from this particular topic, that is sources of history. तो उसमें अलग अलग themes में हमने divide कर दिया है. Those of you who haven't seen it, हमने एक अपना PYQ का booklet भी release किया है that you can access from your portal, or if you are present in the class physically, you can also obtain a physical copy, right? So the themes within this topic of sources of history include the literary sources and the archaeological sources, right? Now, literary sources में क्या क्या सब themes हैं? Indian history writing tradition, Kalhana as a historian, foreign travelers, the subject of historiography, and archaeological sources, right? So these are the different themes, and about 20 questions have appeared from this particular theme in the previous year's questions. And what we try to do when it comes to the selection of questions is we try to cover all the types of PYQs that have appeared in the previous year's questions, and those themes which have not yet appeared but have a high likelihood of appearing, or those questions which are crucial to unraveling the entire topic, those questions we add. Now, while we are going to discuss all the questions in the classroom itself, about 4 or 5 questions I'd be asking you to write in real time, right? So that I can put a timer on the board and then you can write it. And then after that, we'll be discussing those. Now, the questions that I ask you to write, they are all going to be from different themes. So if there is a similar theme and usse 2 या 3 questions आए हुए हैं, I'll be asking you to write one of them so that you have an opportunity to express yourself, right? Now, the questions for today read: number 1, how has the periodization of Indian history evolved from the colonial period to the present? Second one, the landscape of ancient Indian historiography has undergone remarkable evolution. Elaborate. And third, ancient Indians had no sense of history. Critically evaluate. Now, as it is apparent, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही थीम से उठाए हुए हैं, but they represent different aspects of the same theme, that is historiography. So I'll be presenting you with an opportunity to write one of these in the classroom. The second theme refers to is archaeology. Question number 4 reads: archaeology offers comprehensive insights into the past and is indeed a valuable source of history. Illustrate. And question number 5: the study of epigraphy is much better suited to the reconstruction of ancient Indian culture than to political life. So the question number 5, the second question in this theme, is related to inscriptions, the study of epigraphy, but it is part of the same larger theme of archaeology. So we'll be attempting one of these in the classroom itself.
Next question, how did the Itihas Puran tradition of history emerge? What are its important features? Now, there are certain thematic topics within this particular chapter that you will find questions being repeated from, right? One of these is the Itihas Puran tradition, and this is one of those questions where students usually have a lot of trouble trying to analyze the question. So that is why I have included this in the discussion itself. Next is number 7. Do you agree that archaeological evidence often helps in the better understanding of literary sources? So this is a comparative analysis of archaeological and literary sources and the utility of archaeological sources for understanding literary sources better. So you can put this within the theme of archaeology itself, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों के बारे में बात करनी है, archaeological as well as literary sources. How archaeological sources act as a complementary to literary sources, right? Then, citing appropriate examples, examine the strengths and limitations of foreigners' accounts for reconstructing Indian history. So this is a question purely from the literary sources. Another question from the literary sources, critically examine Kalhana's Raj Tarangani as a source of Kashmir's political history. And lastly, critically discuss the relevance of Indian Shruti literature as a source of history. Now, these cover different types of literary sources. One is a foreign source, one is a secular source, and the last is a religious source. So we'll have to see कि इसको कैसे करना है इन तीनों को tackle, right? Now, coming to the very first question, how has the periodization of Indian history evolved from the colonial period to the present? अब देखो, इस वाले को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अटेम्प्ट द सेकंड एंड थर्ड वंस, राइट? क्वेश्चन इज अबाउट द periodization of Indian history, specifically its evolution over time. और सिलसिला शुरू कहां से होता है? विद द colonial school of history writing. And J.S. Mill, who was the first British scholar to compile a colonial history of India known as the British History of India in the year 1817. Now, what he did was to divide Indian history into 3 parts. क्या नाम दिया है इसको इन्होंने? Hindu past, India's Muslim past, and India's British past. ठीक है? What were the dividing lines between these? Important political developments, the establishment of the Delhi Sultanate in 1206, and the Battle of Plassey in 1757. ठीक है? What are the flaws associated with this type of periodization? ठीक है? First of all, it presents a distorted and communalized view of Indian history designed to divide and rule Indians. ठीक है? Second problem, what were the deterministic developments leading to the emergence of these 3 phases? It was important battles or singular political events. ठीक है? So this is said to be a politically deterministic kind of history.
right? Having little or no regard for the socio-economic processes that are often responsible for wide-ranging historical change. So the perspective with which this history writing has taken place is an outdated one. Now historians have moved away from it. Another problem क्या है ये? Mill, what he was doing was actually that he was not doing any fundamental foundational research with regards to Indian history. He never even visited India. Rather, he simply took the way in which European scholars used to periodize European history and then copy pasted it onto Indian history. So this was a very Eurocentric view of Indian history. Traditional European history was also divided into three phases. क्या नाम थे इनके? The classical age, the dark age, and the modern age, the age of enlightenment. ठीक है? And by positioning Europe's classical age parallel to India's Hindu phase, Europe's dark age parallel to India's Muslim age, and Europe's modern age parallel to India's British history, what was J.S. Mill trying to do? He was trying to say that the Middle Ages in India, the medieval phase in India, was a dark age in Indian history, and like Enlightenment, which led to the modernization of Europe, the establishment of British rule was leading to the modernization and civilizing of India as well. Okay? So it was purely politically motivated kind of history writing designed to justify the establishment of British rule. ठीक है, इसके साथ ये बड़े बड़े लॉज हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के इंडियन हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन के साथ. So there was a need for reform. Which set of historians were the first to respond? Nationalist historians. So, first phase of evolution emerged with the emergence of nationalist historiography. Did they stick with the three-part periodization or did they discard it? They stuck with it. But difference क्या था? Nomenclature was changed. The nomenclature was secularized. जो communal undertones थे, they were discarded. And more universalist platform पे ले आए by renaming the three phases as India's ancient, medieval, and modern age. However, this response was also not a substantive one. It was simply skin deep, superficial response tha, because the basis for periodization remained the same. It was the same dates of 1206 and 1757 that they stuck with. While the British had defined India's so-called British age as a modernizing phase of Indian history, as a civilizing phase of Indian history, Indian scholars ने क्या बोला? India's modern age is best reflected in India's struggle against imperial rule, struggle against foreign rule. For India's anti-colonial struggle.
Now, while the immediate opponent of the nationalist historians were obviously the British colonial masters, but they even extended the same, you can say, antagonism towards India's Muslim rulers of the medieval age. So even medieval rulers were considered to be foreign invaders. And this was a major shortcoming of theirs. Okay? So apart from simply changing the nomenclature and redefining the impact of modern Indian history or the emphasis of modern Indian history, कोई major change नहीं हुआ. And thus there was a need for further evolution. Next phase of evolution is going to take place after independence, when Marxist historians began reinterpreting the Indian past. Okay? And what would be the basis on which they would reinterpret the Indian past? Yes, they would look at history through the lens of class struggle. Based on economic determinism. They would look at Indian past through the lens of oppression and exploitation, oppression of the have-nots by the haves. And on this basis, they would once again divide Indian history into three phases, namely pre-colonial, colonial, and post-colonial. And with this, would the watershed marks of Indian history remain the same, or would they shift? They would shift. Would they be turn of the coin instances or transformational phases? Phases होंगे, ठीक है? तो pre-colonial would include both the ancient and medieval periods of Indian history, including the advent of British rule up to the emergence of British sovereignty in parts of India. Okay? They would focus more upon processes, socio-economic processes, such as the emergence of capitalism, the commercialization of agriculture, the emergence of a new commercial class of, we can say, a group of people who were cooperating with the British colonial oppressors in order to exploit Indians. ठीक है? तो ये phases में बात करेंगे. They would not talk in terms of particular years or events. So 16th to 18th century एंड कलोनियल से पोस्ट कलोनियल में आने पर लेट 20th सेंचुरी. ठीक है? इज दिस क्लियर? प्रॉब्लम क्या था इस तरह की हिस्ट्री राइटिंग में? दैट इट प्रोवाइड्स way to generalize the framework of historical appreciation, and it seems to gloss over the complexity of Indian historical development. Regional histories या फिर the histories of marginalized sections, they are often overlooked. So once again, there was a particular vacuum that was left behind by the Marxist historiography as well. Second problem
was the perspective of economic determinism, right? तो material determinism कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है that only economic processes are going to dictate the development of history writing or historical development. Historical change can be induced by a wide ranging set of social, economic, political and cultural changes. तो trigger कहीं से भी आ सकता है, and it is a wrong assumption to say that economic determinism से ही history का progression dictate होता है. Clear? So these are the shortcomings. To overcome this, a new school of history writing emerged, that is the subaltern school of history writing. And from what perspective did they try to reinterpret historical change? History from below. So history of those regions and those groups who had till now been overlooked. Okay? So history from below. They would look at historical change through the lens of marginalized sections such as women, lower castes, religious minorities, neglected regions, ideological minorities, etc. ठीक है? Now, तो किस तरह का सिनेरियो इमर्ज होगा? देयर वुड बी वन ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु वुड बी अप्रिशिएटिंग इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री थ्रू द लेंस ऑफ वुमेन, one set of scholars who would be reinterpreting Indian history from the lens of lower castes, one from religious minorities, one from neglected regions, different neglected regions के लिए अलग अलग sets of scholars, one who would be talking about different kinds of political ideologies and उनका development कैसे होता है. So will this result in any single universalist and homogenized framework of history, or will it lead to the creation of a complex picture जहां पे कई तरह की हिस्ट्री simultaneously parallel में डेवलप हो रही हैं? The second scenario, right? And as a result, are the subaltern scholars ever going to try and present you can say systematic periodization of Indian history, or will focus shift away from that? It will shift away from that. So no single unified periodization framework was possible under this scenario. While this is a correct way of appreciating history, it still leaves us with a problem. क्या? कि भाई हम हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा ना, वो रेफरेंस पॉइंट इसमें नहीं सेट हो पाता है. ठीक है? एंड दिस रिजल्ट्स इन द इमर्जेंस ऑफ अ वेरी डिसजॉइंटेड नैरेटिव. तो कोई यूनिवर्सल हिस्टोरिकल थ्योरी के डेवलप होने का चांस ही इसमें खत्म हो जाता है. एंड दस recent trends have tried to reinterpret historical change in a new light. They have been towards globalization and universalization of Indian history.
with what? With global developments. So they have tried to reinterpret Indian history as if it was not happening in a vacuum. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि India was developing historically separately from the rest of the world. Developments around the rest of the world were influencing Indian history, and India's developments were also influencing global history. So इसके ऊपर उन्होंने focus किया है. And they have focused upon trends such as the influence of capitalism on the development of world history, migration, technological development, economic reorganization, and even environmental change, while trying to study the impact of these major globe shaping movements on Indian history. And from this perspective, they have come to a new understanding. Kya? That the traditional tripartite division of Indian history is not sufficient to capture the complexity of historical development in India. Okay? Therefore, while ancient, medieval, and modern history continue to remain important periods in India's historical development, some other transitional phases have also been added, namely early medieval history, early modern history, and post-colonial or post-independence history. ये समझ में आया है? अब ये बताओ, how would you begin and end this answer? इंट्रोडक्शन किस नोट पे होना चाहिए, कंक्लूजन किस नोट पे होना चाहिए? Now that can be said about the early phases. तो यानी कि colonial historiography और nationalist historiography के बारे में तो बोल सकते हो कि politically motivated था, but can it also be said about the Marxist, subaltern and recent trends कि politically determined था periodization? नहीं. So आप बोल सकते हो कि अलग factors responsible थे. तो एक तो political objectives हो गए, उसके साथ साथ research methodologies, understanding the views of interpreting, they were responsible for the evolution of periodization of Indian history. ठीक है, so that is the note where statement of fact के साथ आप शुरुआत कर सकते हो उसका. ठीक है, what would be the appropriate note to conclude the answer upon? ठीक है, ठीक है. Periodization has evolved accordingly with better understanding, more nuanced approaches. But you would be essentially stating the same thing that you have done in the introduction ना. वहां पर भी तो आपने यही बोला है कि with changing political you can say perspectives, with changing understanding of historical change, with changing research methodologies, etc. ये evolution हुआ है. तो end कैसे करना चाहिए? What you can do is provide a value judgment over here. Is this evolution a welcome development or not? है या नहीं है? Why? Because nahin, you should not focus only upon the last phase, because once again there can be no final word in history writing.
even this would be challenged in the future. I don't know what would be the parameters on which it is going to be challenged, but I'm certain that इसको भी लोग बाद में challenge जरूर करेंगे. ठीक है? In fact, challenges होने शुरू भी हो चुके हैं. People don't agree that post-independence history should be looked at as being a separate phase of Indian history from the modern age. So there are a number of changes and continuity that are taking place. ठीक है? तो challenges आएंगे. I am asking, what does this constant evolution tell you about the state of the discipline? Is it a living discipline or is it a stagnant one? Living discipline, constantly evolving, constantly changing over time. And that intellectual curiosity is what keeps the discipline of history, which superficially appears to be a very static subject, alive and interesting. Therefore, it is a welcome development. Okay? So that is the note on which we can conclude the answer. Online students, it was not entirely Hindu or Muslim. There were Muslim rulers in Hindu period and vice versa. You're exactly right. That is why we have said that it was a distorted and communalized view of Indian history. Such as? Between. Okay, so as we change our positions in the present, our perspective of looking at history also changes. So the parameters of that conversation also keep on evolving. Okay. Any doubts, online students? Anything I can help you with? Clear? Chaliye. Right. We'll be moving along to the next question. The landscape of ancient Indian historiography has undergone a remarkable evolution. Elaborate. This is a question I want you to attempt first, then we will discuss it. Question reads, the landscape of ancient Indian historiography has undergone remarkable evolution. Elaborate. I'm putting a timer on the board. कितना टाइम चाहिए 20 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए 9 minutes 10 minutes 9 minutes चलिए दिन क्वेश्चन समझ में आ गया है ना योर टाइम स्टार्ट्स नाउ
All right. So I hope you guys were able to attempt the question. Now, what are the demands of this question? What do we need to accomplish over here? We need to trace the evolution of historiography of India, right? As what? As a discipline, as a modern discipline. Now, what is the framework that we are going to be following over here? We will need to talk about the important schools of history writing. इसके अंदर क्या क्या करना होगा हर स्कूल के लिए? We'll need to tell who the important scholars associated with the particular school are. What their contributions have been. But for a separate school to have emerged challenging this particular school, this school must have been suffering with certain limitations also. And we'll need to highlight them so that we can prepare the stage for the emergence of a new school. Okay, so this is the general framework that we are going to be following for the entire answer. Same framework रहेगा सारे schools of history के लिए. Now, can you tell me the important schools of history writing which emerged from the colonial periods onwards? सबसे पहले colonial school, then nationalist school, then Marxist school, then Subaltern school, and finally the contemporary post-colonial, post-modernist, अलग-अलग बोल सकते हैं आप. अब केस बाय केस जाना है हमें एंड ये वाला फ्रेमवर्क अप्लाई करना है. सो some famous scholars associated with the colonial school, J.S. Mill हो गए, Vincent Smith हो गए, H.H. Wilson हो गए, etc. What are their grand contributions to Indian history writing? They were the ones who developed Indian history as a modern discipline. They were the ones who did foundational research. They were the ones who translated ancient Indian texts. They were the ones who excavated ancient monuments, fossil records को उन्होंने discover किया, interpret किया, etc. All those things. All of these very hefty contributions. But limitation क्या था? Distorted communalized view of Indian history present किया है इन्होंने. While they were interpreting Indian texts, they focused only and only upon the ancient Sanskrit texts, and they interpreted ancient Indian culture and ancient Indian history through the Brahmanical lens, elite lens के through. They glossed over the complexity of Indian literature. Okay? Further, they were writing history with a purpose. With the purpose of doing what? Justifying the establishment and expansion of British rule in India. तो ये इनकी शॉर्टकमिंग्स थी. देन आते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस. इन्होंने क्या किया? कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं? आरसी मजूमदार और डीडी कौसाम्बी इज अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन. ठीक है, डीडी कौसाम्बी, शायद मैंने गलती से यहाँ पे इंट्रोड्यूस लिख दिया है इनका नाम. हाँ, नॉट डीडी कौसाम्बी, एएस आल्टिकर आप एक दूसरा नाम लिख सकते हैं.
तो प्लीज रेक्टिफाई दिस, ये मॉडल आंसर में यहाँ पे गलती से लिख दिया है, इनका नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, एस आल्टेकर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तिलक का नाम आप चाहो तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वीडी सावरकर का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बिपिन चंद्रा को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ही इज अ मोर मॉडर्न वैरायटी ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। ही इज पार्टली मार्क्सिस्ट, पार्टली नेशनलिस्ट एंड प्योरली गांधीयन हिस्टोरियन। ठीक है, तो उनका नाम आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं डिफाइन करते हैं कि मैं इस वाले स्कूल से बिलोंग करता हूँ, नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज देयर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन? दे ट्राई टू रेक्टिफाई मेनी ऑफ द डिस्टॉर्शंस ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, व्हाट एल्स? They gave Indians confidence in their past. They glorified Indian past. They brought out achievements of ancient India which had been overlooked or minimized by the colonial historians deliberately. ठीक है, but problem क्या था? Once again, politically motivated history लिख रहे थे, and in their zeal to criticize and dismantle British rule, they also glorified those Indian figures, those Indian rulers who had resisted the establishment of Muslim rule in India. So once again, ना चाहते हुए भी communal character इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को दे दिया। ठीक है, देन आते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। हु आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स? डी कौसाम्बी, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, etc. When were they writing their history? Immediately after independence, 1950 से ये सिलसिला शुरू हो गया। What are the political objectives they are trying to fulfill? India had recently become divided on the basis of religion. India was about to be divided on the basis of language. हो सकता है कि कुछ और problems हो जाते। Priorities क्या थी? Political integration, national integration, right? And they also wanted to undo the historical injustices. So therefore, they took the Marxist approach of looking at historical development through the lens of class struggle. ठीक है, contribution क्या था इनका? They were the first ones who viewed Indian history through a scientific lens. ठीक है, तो economic determinism का lens, that is a highly scientific version of history writing. That is what they did. They brought rationality to Indian historical development. The way in which Indian history had been interpreted, जो great man theory of history है, उससे परे जा करके अब इन्होंने history को on the basis of socio-economic developments study करने की कोशिश करी। Problem क्या था? They tried to create a grand unified theory of history which resulted in great amount of generalization. तो complexity of Indian history को overlook कर दिया। Further, they tried to interpret Indian history through the lens of center. ठीक है, कि center में जो भी developments हो रहे हैं, they are going to have a very important impact on the development of Indian history even in the regions, peripheral societies में भी, which is not the case. तो complexity को इन्होंने overlook कर दिया। To overcome this shortcoming, subaltern school of history writing emerged, led by historians such as पार्थ चैटर्जी, रंजीत गुहा, etc. Right? Now, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट किया? They were writing histories from below. This resulted in the emergence of histories rather than a single unified history. And इनका grand contribution क्या है? That they were able to bring historical focus upon those communities, regions and groups which had hitherto been neglected. ठीक है, प्रॉब्लम क्या था इसके साथ? कोहेरेंस नहीं था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव कंटेम्पररी और पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस, फिगर्स सच एज डी के चक्रवर्ती, दीपेश चक्रवर्ती, एटसेट्रा। ठीक है, अब इनका फोकस क्या है? दे आर राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पोजिशन दैट द इंडियन हिस्टोरिकल सेंस हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय कॉलोनियल हिस्टोरिकल सेंसिबिलिटीज। तो इंडिया की हिस्ट्री को डीकॉलोनाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो द वे इन विच all these schools of history
have been interpreting the Indian past is within the framework established initially by the colonial historians. तो उसको challenge करने की जरूरत है अब, ठीक है? So this is their thrust. This is the most recent trend that has emerged. Clear? So now that you know about this, tell me how should you begin the answer and how should you be ending it? शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ठीक है, तो you can simply state the fact that modern history writing started with the colonial rule, with the establishment of colonial rule, and from there it has evolved over the last 2 centuries. ठीक है, so it has gone through these stages of development. ठीक है, that is an appropriate way to introduce the answer. End कैसे करना चाहिए इसको? लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट आप वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कर दीजिए कि ये अच्छा वेलकम डेवलपमेंट है या फिर नहीं है. इट इज अ वेलकम डेवलपमेंट बिकॉज इट टेल्स यू दैट इंडियन हिस्ट्री रिमेन्स अ लिविंग vivid subject which invites a lot of intellectual curiosity, and इतना ज्यादा जो evolution हो रहा है that is a symptom of that curiosity, so we should welcome it. ठीक है, that is the note on which we could end the answer. All right, now there's a question, please teach how to use template as well. Which template are you referring to, Aditya? I'm not entirely certain, can you please clarify? So Aditya, which template were you referring to? Please clarify so that I can provide some clarity. In the first question, can we also write about the categorization of pre-proto and historic periods? Jadunath Sarkar, nationalist historian. नहीं, तो यहाँ पे प्री प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में हम नहीं लिख सकते हैं. दैट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चंस इंक्वायरी. ठीक है, that would be a different question. And Jadunath Sarkar was not exactly a nationalist historian. We put him in the category of a colonial historian. ठीक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, द ब्रिटिश नाइटेड हिम, सर का टाइटल दे दिया था उनको. In fact, he is the one who made the claim that India's modern age started with the establishment or with the Battle of Plassey. तो आदित्य, if you are able to hear me, कौन सा टेम्पलेट पे क्लैरिटी चाहते हैं? Please let me know. All right, I hope you got my message and you'll get back to me. In the meanwhile, we'll move on to the next question. Next question reads, ancient Indians had no sense of history. Critically evaluate. For question number 3, the demand of the question is to resolve the debate with regards to the ancient Indian sense of history or historical sensibility. Now, ये debate शुरू होता है with colonial historians. Such as Vincent Smith, H. Wilson, etc. What did they do? क्या बोला इन्होंने?
they made the claim that ancient Indians lacked a sense of history. They were basing their allegation on the basis of the claims made by people such as Al-Biruni, who said that Indians lacked the necessary intellectual curiosity needed for historical analysis. And why was this? This was because, according to him, Indians were more interested in the afterlife, in the other world, than this world. So he blamed this on India's excessive spiritualism, which he was deeply critical of and felt that it had a stagnating impact on India's intellectual development. Further, later on, Muhammad Habib also extended this view of thought, this line of thought, and made the claim that history writing was it germane to the Indian intellectual tradition or was it alien to the Indian intellectual tradition? So it was alien to the Indian intellectual tradition, and it was a grand contribution of Islam to India. ठीक है? तो हमने अभी इस डिबेट में जो एक पोजीशन है उसको बताया है. वी हैव सिंपली एस्टैब्लिश्ड व्हाट दैट पोजीशन इज. उसको और एक्सप्लेन नहीं किया है हमने. ठीक है? दैट इज द पोजीशन दैट एंशिएंट इंडियंस lacked a sense of history. Now, the way in which this sense of history was defined is also quite specific. History, according to these scholars and intellectuals who were saying that ancient Indians did not have a sense of history, was defined as a chronological, analytical, connected, and rational understanding of the past. ठीक है? Further, the way in which it is presented was also very specific. It should be entirely factual. There should be no ambiguity with regards to authorship. And the author must have used, for creating these works of history, actual pieces of evidence. So it should be empirical.
ठीक है। एंड ये बड़ा स्ट्रिक्ट सा डेफिनेशन बनाने के बाद कॉलोनियल स्कॉलर्स ने क्या बोला, दैट इन द वास्ट कॉर्पस ऑफ इंडियन लिटरेचर वी डू नॉट फाइंड a single work which fulfills this criteria, and on the basis of this they made the claim that ancient Indians lacked a sense of history. ठीक है, so that is one side of the argument, one side of the debate. Now we need to come up with the next side of the debate, and over here the charge was led almost single-handedly by Romila Thapar. क्या बोला इन्होंने, did Indians have a sense of history or not? Yes, but was the Indian sense of history the same as the Western sense of history? No. So they had their own unique sense of history. And for making this claim, she has tried to redefine the parameters of what should be qualifying as a work of history. And उसके लिए केवल एक क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, क्या है, that the so-called work under review should depict awareness of the passage of time. ठीक है, तो कुछ चीजें पहले हो रही हैं, कुछ चीजें बाद में हो रही हैं, दैट इज ऑल दैट इज नेसेसरी. बाकी जितने भी कंसिडरेशंस हैं दे आर ऑल सुपरफिशियल अकॉर्डिंग टू हर. एंड शी सेज दैट इंडियंस had a very well developed sense of time. They looked at time as something which had linear as well as circular progression. So while it can be said that ancient Indian literature did not fully fit within this very strict definition of being historical, but according to this definition, it definitely depicted a very unique sense of history writing. Secondly, she says that there are two different types of historical sensibilities. Externalized and embedded history. और जो कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं ये क्या किसके ऊपर फोकस करते हैं, केवल एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री, जो इस तरह के फीचर्स जिसमें होते हैं, जबकि इसको इग्नोर कर देते हैं. बट दैट इज अनफेयर अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर. ठीक है, तो बोथ शुड बी कंसिडर्ड वैलिड टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग. शी हैज फर्दर मेड द क्लेम दैट it is not that Indians had only embedded tradition of history writing, they even had externalized tradition of history writing. तो दोनों प्रेजेंट थे एंड दोनों को ही कॉलोनियल स्कॉलर्स ने ओवरलुक कर दिया है because they were more interested in proving that Indians did not have a sense of history and thus therefore they were somehow less than the Western civilization. So that was done to justify the establishment of British rule in India. ठीक है, Now what do we need to do? जो इन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें, राइट? तो किस तरह का एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम? शोइंग दैट दे हैड बोथ एम्बेडेड एंड एक्सटर्नलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, इतिहास पुराण ट्रेडिशन, these are stories, mythological tales of gods and goddesses, but with a lot of historical facts enmeshed within it. So embedded form of history. Then we have more externalized forms of history such as dan stutis,
आख्यान्स, प्रशस्तीज, रॉयल बायोग्राफीज, sacred hagiographies, etc. Then we have a vast body of oral tradition. In the form of poetic compositions by bards and minstrels such as bhards, charans, magads, sutas, etc., which record in the form of folklore the deeds of great kings, important warriors, famous warriors, etc. Then we have references by a number of foreign travelers, including Al-Biruni as well as Huensang, who have reported that in several cities of India there existed exhaustive royal archives. ठीक है? Exist करते थे. In fact, Huensang refers to them by the term Niloptu as well. So this indicates toward the tradition of a rich, you can say, tradition of record keeping as well as historical or chronicle making in Indian courts. ठीक है? तो दोनों टाइप ऑफ हिस्ट्री लिखी जाती थी. फर्दर शी सेज दैट जो यूरोपियन स्कॉलर्स, कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं, who have claimed to be custodians of history, they are guilty of a certain type of intellectual overreach. Should we assign them this authority that they should be able to unilaterally define what is and what should not be considered history? ऐसा तो है नहीं. कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई राजा मर गया और विरासत में अंग्रेजों को छोड़ गया कि तुम ही बताओगे कि हिस्ट्री के पैरामीटर्स क्या हैं. It is an open thing. Further, she claims that each civilization has its own unique intellectual traditions, and it is not necessary what is considered important by the intellectuals of one civilization should be considered important by intellectuals of other civilizations as well. And India में जो scholars कुछ भी लिखते थे, what was their main objective? किस ऑब्जेक्टिव से लिखते थे? To inform future generations of the mistakes and you can say achievements of previous generations only? No, it was to facilitate all around development of the individual personality and social cohesion, social happiness by manifesting the four purusharthas. So Indian intellectuals were more interested in maximization of the four पुरुषार्थास. क्या है ये? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. What kinds of ideas are these? Are they purely materialistic ideas, or do they represent a healthy balance between materialism and spiritualism? Healthy balance between materialism and spiritualism. And if you want to expound these ideas, popularize these ideas, make these ideas embedded in the popular consciousness, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम कैसा होगा? वुड इट बी अ प्योरली साइंटिफिक एंड रैशनल वर्क, और वुड इट बी अ माइथोलॉजिकल वर्क जिसमें यूनिवर्सल लॉजिक एम्बेडेड हो? Mythology in which universal logic is embedded, and that is why
Indian intellectuals made a conscious choice to develop a unique style of writing which was best suited for their intellectual objectives. So it is not by accident that much of Indian literature of the ancient period is religious, spiritual, or normative in nature, right? It is by design. So would it be correct to say that a tradition which so so focused a manner fine-tuned its intellectual approach could be unaware of the importance of history? वो बोलना गलत होगा, that would be unfair. Further, जो colonial scholars हैं, they overlooked one very important work, that is the Raj Tarangani of Kalhana, right? Now, this work has all these features. ये सारे features हैं इसमें. And could such a work have emerged in a vacuum, in an intellectual vacuum, जहां पे इस तरह का कोई tradition रहा ही ना हो, and then ultimately अचानक से a work of very high quality in this tradition emerges? नहीं. So the presence of this work indicates that a more scientific and rational approach to history writing existed in India, and the Raj Tarangani was the culmination of that tradition. ठीक है, it could not have been the starting of that tradition. तो किस नोट पे कंक्लूड करना चाहिए हमें? Should we end on an ambiguous note कि भाई the question still remains open, या फिर डिबेट हम सेटल मान के चलें? सेटल मान के चले. हमने इतना इंफैटिकली अभी आर्ग्यू किया है कि भाई इंडियंस के पास अपना यूनिक सेंस ऑफ एंड हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री था. सो दैट इज द नोट ऑन विच वी विल बी एंडिंग द आंसर. एंड व्हाइल एंडिंग द आंसर, फोकस हमें किस पे करना चाहिए? वी शुड बी एम्फसाइजिंग अपॉन द मिस्टेक्स ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल, ऑफ द कॉलोनियल स्कूल. इनमें फ्लॉ क्या था? क्या बड़ा सबसे बड़ा फ्लॉ था? नॉट ओनली दैट, कि भाई ये बहुत एरोगेंट अप्रोच लेकर के चल रहे हैं. दे आर क्लेमिंग ओनरशिप ओवर द एंटायर डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री एंड हाउ इट शुड बी डिफाइंड, एंड दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड. ठीक है, so that is the note on which we can end this particular answer. All right, online students, any doubts? Clear? All right, now moving on to the next question. Question reads, archaeology offers comprehensive insights into the past and is indeed a valuable source of history. Illustrate. लिखना है, डिस्कस करें? डिस्कस कर लें, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. What is the demand of the question? We need to show through the use of examples the historical utility of archaeology. Why are we focusing upon examples? What is the command word? Illustrate. Illustrate का मतलब होता है to shed light upon with the help of examples. अप्रोच क्या रहना चाहिए अपना यहां पर? देखो, दो चीजें पॉसिबल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन अप्रोच दिस
from the perspective of archaeological studies itself. So different types of archaeological findings, for example माउंड्स हो गए, फॉसिल्स हो गए, बायोलॉजिकल रिमेन्स, और इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, वेरियस टूल्स, आर्टिफैक्ट्स एंड वेपन्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए। इनका हम हिस्टोरिकल यूटिलिटी bring out कर सकते हैं with the help of certain examples to bring out their political, economic, social, cultural, philosophical importance, etc. Or we can take the reverse approach कि political history, economic history, social history, cultural history, how is this reflected in archaeological findings? So which approach do you think would be more appropriate? पहले वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला क्यों? हाँ, कवरेज हो जाएगी एंड यू विल नॉट हैव टू सर्च कि भाई माउंट्स में मैं क्या रिलीजियस या फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस निकाल के लाऊं, ठीक है? सो यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दैट आर अवेलेबल टू अस टू इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी फॉर दीज डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? सो व्हाइल राइटिंग द आंसर ना, पहले अपना अप्रोच फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज यू कैन वेरी इजीली लूज डायरेक्शन। आपके पास इंफॉर्मेशन तो हो सकता है सारी हो, बट कैसे आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली और कोहेरेंटली अपने आंसर में इंप्लीमेंट करोगे, दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। तो हमें ये अप्रोच लेना चाहिए एंड यहां से एक्सपैंड कर सकते हैं कि क्या यूटिलिटी हो सकता है। तो बताइए, पॉलिटिकल हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजी, गिव सम एग्जांपल्स। इंस्क्रिप्शंस, किस तरह का इंफॉर्मेशन मिल सकता है? क्रोनोलॉजी के बारे में पता लग सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में पता लग सकता है, इंपॉर्टेंट बैटल्स, टेरिटोरियल एक्सटेंट, इसके बारे में पता लग सकता है। सम अदर काइंड ऑफ यू कैन से आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड जिससे पॉलिटी के बारे में पता लगता है। कॉइन से सिमिलर इंफॉर्मेशन वी गेट, क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉइन से, वेरियस आर्टिफैक्ट से, फॉसिल रिकॉर्ड से भी, राइट, कई सारी चीजें पता लग सकती हैं। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता लग सकता है, मेटालिक प्योरिटी ऑफ कॉइन्स, उससे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पता लग सकता है, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता लग सकता है। सिमिलरली सोशल डायमेंशंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम आर्कियोलॉजी, आर्टिफैक्ट से, टेम्पल से, स्कल्पचर से, कॉपर प्लेट से पता लग सकता है। डोनेशंस कौन कौन से ग्रुप्स कर रहे थे, किसको कर रहे थे, व्हाट वाज द क्लास स्ट्रक्चर लाइक, कास्ट और वर्ना और क्लास का क्या रिलेशनशिप था, हु वर द ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एटसेट्रा, क्या बॉन्डेड लेबर हो रहा था, हु वर बीइंग सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर, ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम inscriptions and other artifacts. कल्चर के बारे में, रिलीजन, फिलॉसफी, इसके बारे में कुछ पता लग सकता है। इंस्क्रिप्शन से पता लग सकता है, टेम्पल से पता लग सकता है, ग्रेव से पता लग सकता है, स्कल्पचर्स के थ्रू पता लग सकता है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ यू बीइंग एबल टू एक्सपैंड इट, ठीक है? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू पिक द करेक्ट अप्रोच एंड देन वहां से आप एक्सपैंड कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें और डायमेंशंस भी ऐड कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, रिचुअल हिस्ट्री एटसेट्रा, तो इनके बारे में भी बात कर सकते हो आप। क्लियर है? आगे चलें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
Good. Ashokan pillars about his empire. That is correct. They are primary source contemporary to the time, thus they are reliable. That you can also point out. Extent of the rule, extent of empire, all are valid. Also important for prehistoric period when there were no written records. So archaeology remains our only source of history. Yes, but with these types of arguments, na, we are going into the territory of the utility of archaeology for historical studies as a whole. यहाँ पे हमारा जो मैंडेट है वो काफी स्पेसिफिक है. Comprehensive insight into the past and is indeed a valuable source of history we need to illustrate. So if you are able to fit your arguments within the framework of the dimensions that we discussed, तो दैट वुड बी अप्रोप्रिएट. अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है तो आपको एक अलग सेक्शन वहां पे लगाना पड़ेगा एंड साथ में अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे. Addition or deletion is easily detected, so it is immune to additions and reductions. You're all correct over here, but once again you should always bear in mind कि core demand क्या है क्वेश्चन का. ठीक है. Anything else? चलिए फिर आगे चलते हैं. Next question, number 5. The study of epigraphy is much better suited to the reconstruction of ancient Indian culture than to political life. Expand. 10 marker question hai. I'd like you guys to attempt it. Putting the timer at 7 minutes. ठीक है? 10 marker है.
ऑल राइट, लिख लिया आंसर? तो बताइए, what is the main demand, what is the chief demand of this question? The study of epigraphy is much better suited to the reconstruction of ancient Indian culture than to political life. Expand. Do we need to substantiate this proposition or do we need to debate it? सब्सटैंशिएट करना है, क्लियरली डिफाइंड है, केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सपैंड करना है, इसको रिफ्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिमांड इज टू substantiate the proposition that the study of inscriptions gives us deeper cultural insights rather than political insights. So our task over here is going to be twofold. Firstly, we need to show how the study of inscriptions is a good source of cultural history, and secondly, we need to show how it is a poor source of political history. ठीक है, पहले क्या करना चाहिए हमें? पहले कल्चरल यूटिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शंस उसको लाना चाहिए, फिर बाद में वी नीड टू हाईलाइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस. स्ट्रक्चर भी मिल गया है हमें. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में व्हाट शुड बी द नोट ऑन विच वी एंड द आंसर? शुड वी कंप्लीटली डिस्कार्ड कि पॉलिटिकल यूटिलिटी कोई है ही नहीं? नहीं, तो वो नहीं कर सकते हैं हम. वी नीड टू टेक अ मोर नुआंस्ड बैलेंस्ड अप्रोच, लेकिन साथ में we also need to take into account कि shortcomings हैं and they are real shortcomings, and we need to find a workaround, a solution for them. So our conclusion needs to be prescriptive in nature. We are going to prescribe certain solutions. The note on which we end the answer, that is also clear. What should be the note on which we begin the answer? एपिग्राफी क्या होता है, साइंटिफिक टर्म वहां पे मेंशन्ड है, तो वी नीड टू डिफाइन इंट्रोडक्शन में डिफाइन एपिग्राफी एंड साथ में वी नीड टू मेंशन दैट इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ cultural history. It can illuminate various dimensions of cultural development. And first part of the main body, we need to expand upon these dimensions. किस तरह के dimensions के बारे में बात कर सकते हैं आप? Inscriptions are as an important source of what types of cultural history, किस तरह की awareness generate कर सकता है? For example, language and script, इसके बारे में बता सकता है? अच्छा. Then crafts traditions, when it comes to working with stone, crafting pillars, working with metals, etc. उसके बारे में बता सकता है. What else? Do inscriptions contain important religious, spiritual, and philosophical information? Do they give insights into the ritual life of the people?
Do inscriptions shed light upon cultural patronage? Who were the important players involved in cultural creation? कौन से rulers, कौन से trade guilds, etc. they were involved? Do they give any insights into the forms of art? Important individuals associated with them करते हैं. So they talk about music, dance, drama, various types of performative art, the construction activity undertaken by different kings. ठीक है. So artistic creations or artistic trends को भी highlight करते हैं. Further, can these inscriptions act as a good source to study the process of cultural diffusion within India and between India and other cultures? Yes. Example कोई दे सकते हो इसका? The presence of Ashokan inscriptions in Kharoshti script, Aramaic language, Greek language. ठीक है, तो all that is evidence to the interplay between Indian and foreign cultures. ठीक, इस तरह का बहुत सारा important historical information हमको इससे मिल सकता है. Now, coming to the second task at hand, to highlight the shortcomings of inscriptions as a source of history with respect to political history. What kind of information do inscriptions provide politically? They help us establish chronology, important kings, dynasties, political extent, administrative details. इन सबके बारे में information देते हैं. But do they provide detailed information or simply snapshots? Snapshots, which prevent us from developing a comprehensive understanding of political history. Most of these inscriptions, they tend to be eulogistic in nature. ठीक है, panegyrics होते हैं, and they can often have a very, you can say, marked patron bias. So they are always going to present a very favorable picture of the person who got them inscribed. So this can result in a distortion of political history writing. Conclude किस नोट पे करना है हमें? Prescriptive conclusion देना है. How to overcome this shortcoming? Correlate करना पड़ेगा with other available sources, other archaeological sources as well as literary sources. But at the same time, inscriptions remain extremely important for the study of history, especially cultural history. But at the same time, political history में भी काफी important role play करता है. We simply need to be aware of these shortcomings to be able to overcome them. ठीक है? Simple. आगे चलें. Online students, can we say that hereditary monarchy and more emphasis on following dharma tradition ignore individual king personal glorification, ignore political history largely? No, many of these inscriptions were in the category of royal inscriptions, right? And royal inscriptions are always going to be highly favorable of the person who got them inscribed. So it would be wrong to say that they ignore individual king's personal glorification, etc. Okay. चलिए then. Moving on. अगला क्वेश्चन. हाँ. How did the Itihas Puran tradition of history emerge? What are its important features? So, क्वेश्चन इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसकी डिमांड को डिकोड करने में बहुत ज्यादा साइंस इन्वॉल्व नहीं है. टू सेंट्रल डिमांड्स है क्वेश्चन के. क्या क्या?
origin of the itihas puran tradition, and second, features or characteristics of the itihas puran tradition. What should be the order in which we should address these demands? पहले किसके बारे में बात करनी चाहिए, फीचर्स या ओरिजिन? ओरिजिन, और उसके बाद फीचर्स के बारे में. इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए भाई? ये जो इतिहास पुराण ट्रेडिशन है दैट इज एन अननोन करेंसी, तो हमको इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना है कि एग्जैक्टली है क्या ये. ठीक है, तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इतिहास पुराण ट्रेडिशन. इसमें क्या करेंगे हम? विल प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट्स and the nature of this literary tradition, the nature of this literature. कौन कौन से वर्क्स इसमें इंक्लूड होते हैं? The Purans, 18 Mahapurans and several Upapurans, along with the great epics, the Mahabharata and Ramayana. ये इसमें आ जाएगा contents. What is the nature of these works? These are mythico historical texts. But is that all they are? मिथिको हिस्टोरिकल का मतलब हो गया, माइथोलॉजिकल है तो डिवोशनल बाय डेफिनेशन हो जाएंगे वो. बट दे ऑल्सो कंटेन, यस, दे ऑल्सो क्रिएट द मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने अगर ये दोनों चीजें बोल दी तो आपका काम हो गया. क्लियर? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट डिमांड, हाउ डिड द इतिहास पुराण ट्रेडिशन इमर्ज? It emerged from the background of a rich oral tradition of storytelling. Further, with the development of spiritual systems and ritual systems, myth creation got involved in the creation of these mythical tales of different gods, goddesses, saints, kings, etc. Further, the emergence of this tradition was also a function of state formation. कैसे? What is the link between mythology and politics? कहाँ पे इंटरसेक्ट? यस, लेजिटिमेसी के पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करते हैं. द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप लेंट इटसेल्फ to the conflation of the genealogical myths of different gods and goddesses with the dynastic histories of different kings. ठीक? Further, were these static works or did they evolve over time? They evolved over time. So these were you can say the result of some things getting added and some things getting removed from these oral traditions. So authorship and redaction. Further, another process which determined the emergence of the Itihas Puran tradition was the crystallization of social hierarchies. तो social hierarchies को इन mythological terms reflect करने के लिए इनको बनाया गया.
in which every section of the population was assigned a particular position, status, and function in accordance with the intellectual sensibilities, Brahmanical sensibilities, the idea of Varna, Ashram, Dharma, etc. ठीक है? Further, I think इतना काफी होगा बोलना, इससे ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है. ठीक है? Is this much clear? समझ में आया सबको? अच्छा. What are the features of this type of literature? If you were to talk about the nature, तो उसके कौन कौन से dimensions आप highlight करोगे? These are mythico-historical texts, neither pure history nor pure mythology. In fact, एक mythological framework में historical information को embed किया हुआ है. Further, would you put these in the category of devotional texts or not? Yes. So these were devotional texts. Would you say that these were educative in nature or not? Were they meant to impart certain lessons to the readers and people who heard them? Yes. So, educational in nature. Focusing upon particularly which type of education? Moral education. Was their purpose not to establish certain ideals by which different individuals and groups within society should live by? Yes. So these were normative or idealistic texts. And one very important function they performed was that they were able to interlink the idea of morality with spiritualism. Okay? So, morality was put within a spiritual or cosmic framework by these texts. Did they or did they not result in the democratization of spiritualism? हुआ या नहीं हुआ? इसके पहले what was the dominant text within Brahmanism? Vedas. But access to the Vedas, was it open to all or was it quite limited? Limited to the upper caste males only. Okay? But now, with the emergence of these popular tales, the popularization and democratization of religion became possible. So you can say that these were populist and democratic texts, pieces of literature. I think this would be more than sufficient. ठीक है, हो जाएगा. यहाँ पे एग्जाम्पल साइट करना ना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. मिथिको हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे. यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे तो किस तरह का दोगे?
कि मत्स्य पुराण में आपको मौर्यन डायनेस्टी की जीनोलॉजी एम्बेडेड मिल सकता है, उससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। या फिर गरुड़ पुराण में आपको गुप्ता डायनेस्टी का डायनास्टिक हिस्ट्री एम्बेडेड हो सकता है। डिवोशनल टेक्स्ट थे तो क्या करोगे भाई, नाम लिखोगे सारे टेक्स्ट के कि शिव पुराण डेडिकेटेड टू शिवा, गरुड़ पुराण डेडिकेटेड टू विष्णु, बट उसका यूटिलिटी कोई नहीं होगा, राइट। तो एक आध जहां पे कर सकते हो बट नॉट एवरीवेयर। योर फोकस शुड बी मोर ऑन एक्सप्लेनेशन rather than illustration over here. To understand the point to morality was connected to spirituality. How was it? क्योंकि धर्म को कर्म के साथ उन्होंने कन्फ्लेट कर दिया, ठीक है। मतलब ये हुआ that these texts through the stories of different gods, kings, sages tried to instruct the people what is good, what is bad, what is right, what is wrong. And इन्होंने हमेशा उन स्टोरीज में क्या बोला, that because Prince Vidhur displayed lust towards an apsara, his eyes were snatched away. So lust, is it a good thing or bad thing? बैड थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। फर्दर, बिकॉज सम पर्टिकुलर रूलर परफॉर्म सम ग्रेट पेनेंस, तो उसको शिव जी ने कोई वरदान दे दिया। गुड और बैड? गुड। परफॉर्मिंग पेनेंस, looking after the elderly, respecting your teachers, respecting Brahmins, etc. So these kinds of things, they were associated with the idea of spiritualism. They are going to help you earn spiritual merit. पुण्य कमाने में काम करेगा, ठीक है। That is the idea over here. Clear है? हाँ हाँ। Moral education part, yes. स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पार्ट, तो वही बात कर रहे हैं हम। देखो, द फंक्शन दैट रिलीजन परफॉर्म्स इन अ सोसाइटी, इन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, क्या हो सकता है? कुछ गार्ड रेल्स क्रिएट करना टू इन्फॉर्म द फॉलोअर कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। That is to maintain order within the society. That is to prevent the society from devolving into anarchy, chaos, ठीक है। Now, उसके कुछ पॉलिटिकल यूटिलिटीज भी हो सकते हैं एंड उसके कुछ आइडियोलॉजिकल यूटिलिटीज भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल यूटिलिटी का क्या होगा भाई? इट वुड क्रिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मार काट नहीं होगी, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ इज गोइंग टू बी हाई, एटसेट्रा, दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्पिरिचुअल या फिर आइडियोलॉजिकल यूटिलिटी क्या होगा? It would act as an instrument in the hands of the intellectual elite to control the minds of the common people, ठीक है। सो इंटेलेक्चुअल हायरार्की, आइडियोलॉजिकल हायरार्की को भी रीइंफोर्स करने के लिए यूजफुल होते हैं। नाउ इन बोथ केसेस आप एलिट्स के स्टेटस को बचाने की बात कर रहे हो, बट द वेज इन विच यू आर डूइंग दिस, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव सेड दो अलग अलग फॉर्मेट्स में या दो अलग अलग इसके डायमेंशंस हम बाहर लेकर के आए हैं। यू आर राइट कि हाँ पैरेलल है बट दे आर स्टिल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, सो इट इज वैलिड कि हम इसको दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग डायमेंशन के थ्रू हाईलाइट करें। क्लियर? अच्छा, ऑन व्हाट नोट कैन वी कंक्लूड द आंसर? डेमोक्रेटाइजेशन एंड पॉपुलिज्म हुआ। अच्छा, स्टिल इवॉल्विंग, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टैग्नेंट स्ट्रीम की तरह था जो कि गायब हो गया। इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ ह्यूज टॉरेंशियल रिवर जो कि अभी तक डेवलप होता जा रहा है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इज part and parcel of the development of India's history itself. So the two cannot be separated. The twain shall not be separated. ठीक है? So that is the note on which we can conclude the answer. ठीक है, तो how we define good, evil, right and wrong to a large extent is still defined by the sensibility embedded in the इतिहास पुराण tradition. ठीक है, तो ये सारे ट्रेडिशंस हमको वहीं से विरासत में मिले हैं, तो ये भी हम बात कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल दीज आर वैलिड।
आई थिंक कि वहां पे एक अलग से फोकस होना चाहिए हमारा स्टडीज में। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है स्पेसिफिकली, लेकिन अच्छे चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट फॉर दैट ना सम एक्स्ट्रा रिसर्च ऑन आवर पार्ट इज गोइंग टू बी नीडेड। थोड़ा उसमें अपने साइड से काम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शैल वी मूव अहेड? अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? चलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। डू यू अग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस often helps in the better understanding of literary sources? Comment. Would you like to attempt it? ठीक है, I'm putting 9 minutes on the timer. Your time starts now.
ऑल राइट, तो हो पाया ये? क्वेश्चन क्या है? Do you agree that archaeological evidence often helps in the better understanding of literary sources? Comment. बताइए करना क्या है यहाँ पे? We need to showcase how archaeological sources can help complement the literary sources, information we get from literary sources. What are the ways in which it can do this? फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी सोर्सेज में जो इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है उसको वैलिडेट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी क्वाइट यूजफुल। यहाँ पे ना जो भी आप आर्गुमेंट कर रहे हो यू विल हैव टू सब्सटैंशिएट दैट विद सर्टेन एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इफ यू मेक द क्लेम that it can help in the validation and corroboration of information given in the literary sources, तो उसके लिए कोई relative example भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स अशोक के बारे में बात करते हैं। However, until and unless the Brahmi script inscriptions of Ashok were deciphered and Ashok was identified as Devanampiya Piyadasi, तो हम historians with absolute certainty वो linkage create नहीं कर सकते थे। That was facilitated by developments in archaeology, by developments in paleography, the study of ancient scripts. ठीक है, so वो एग्जाम्पल हो सकता है। देन इट कैन हेल्प fill the gaps and expand the content of literary sources. For example, literary sources can be a valuable source for learning about, let us say, ancient religion or ritual practices or important kings or mentions of battles or maybe foreign contacts, trade, etc. However, अगर हमको कोई corroborating आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाए, फॉर एग्जांपल फॉरेन कॉइन्स मिल जाए, सेटलमेंट्स मिल जाए, पोर्ट्स मिल जाए, माउंट्स मिल जाए, सेटलमेंट्स मिल जाए, तो वी कैन गिव प्रॉपर कलर, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट टू दोज लिटरेरी डिस्क्रिप्शंस एज वेल। ठीक है, अच्छा, करेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मिसइंटरप्रिटेशंस। फॉर एग्जांपल, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम idea tha that the Harappan civilization was destroyed by an Aryan invasion, but archaeological evidence has concluded has emphasized quite conclusively कि Aryan invasion theory जो है that is invalid. This is borne out by archaeological evidence also, study of linguistics also, DNA analysis also, etc. तो जो मिस इंटरप्रिटेशन है उसको करेक्ट करने के लिए दे कैन बी क्वाइट यूजफुल। Archaeology can also provide insights into non-literary societies. For example, Sangam literature talks about the megalithic cultures. ठीक है, उनके सोशल डायनामिक्स, पॉलिटिकल रिलेशंस, इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशंस उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो वी हैव एविडेंस ऑफ लिटरेरी सोसाइटीज टॉकिंग अबाउट सर्टेन नॉन लिटरेरी सोसाइटीज, तो उनके जो हिस्ट्री है उसमें कलर प्रोवाइड कर सकता है। एंड अगर हमको आर्कियोलॉजी मिले तो उन डिस्क्रिप्शंस को हम वैलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, enhanced understanding of religious and cultural practices. One thing can be that you have descriptions of a Buddhist chaitya, vihar, stupa, Buddhist places of pilgrimage, of worship, different types of temple cults, etc., different kinds of sculptures, right? उसका literary reference मिल सकता है. And then the other kind of evidence can be कि उसका physical representation मिल सकता है through excavations, explorations, and this can help us better understand the religious and cultural dimensions, cultural practices. We can put that into proper context. Further, archaeology can also reveal local and regional variations. Once again, कुछ misinterpretations create होते हैं with literary, exclusively literary studies. For example, क्यों होता है ये?
क्योंकि लिटरेचर एक आइडियलाइज्ड पिक्चर को प्रेजेंट करता है, इट ग्लॉसेस ओवर द रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज। वो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज कई चीजों में हो सकती हैं, स्पिरिचुअल जो रिचुअल ट्रेडिशन है उसमें हो सकती हैं, कल्टिक प्रैक्टिसेस है उसमें हो सकती हैं, या फिर forms of art, materials used for artistic creation, etc. The techniques used for artistic creation, उसमें regional variations हो सकते हैं. Example, पोर्ट्रेट तो चलो ठीक है, रीजनल वेरिएशंस हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, बट एक ऐसा सिनारियो जहां पे लिटरेचर एक होमोजेनस पिक्चर क्रिएट करता है लेकिन आर्कियोलॉजी डाइवर्सिटी रिवील करता है. हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, दैट कैन बी वन कॉन्टेक्स्ट. जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था? इट फोकस्ड अपॉन द अप्रिसिएशन ऑफ हरप्पन हिस्ट्री थ्रू द लेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी. But recent archaeological discoveries are pointing to widespread diversity over both space as well as time. Historical evolution का picture depict करता है. कोई और पीरियड, कोई और फेज? मौर्यन पीरियड अर्थशास्त्र से किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो रिफ्लेक्ट होता है? a highly centralized, highly uniform one. But monumental remains से क्या पता लगता है? कि डाइवर्सिफिकेशन था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इवन पॉलिटिकल सिस्टम्स था, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स गेट रिफ्लेक्टेड. दैट इज व्हाट वी नीड टू आर्ग्यू. What can be the note on which you end the answer? कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, केवल एक के ऊपर एक्सक्लूसिवली नहीं रिलाई करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ्स एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए. क्लियर? हाँ जी. हाँ. So, but isn't the question thing can be or could be at the negative part also, the limitations of the archaeology in defining the literacy? So, for like we have an example that though we have a lot of archaeological evidences for the script, for the Indus Valley script, but we are yet to decode it. There are limitations for that. यस, लिमिटेशंस भी आप चाहो तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, बट एट द एंड आप एंड सेम नोट पे ही करोगे कि भाई डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस आर्कियोलॉजी रिमेन्स क्रूशियल फॉर डिकोडिंग लिटरेरी सोर्सेज. विदाउट आर्कियोलॉजी लिटरेचर रिमेन्स ओरर. आर्कियोलॉजी कैन हेल्प एनरिच लिटरेचर. तो उसको कंप्लीटली रिप्लेस करने की बात नहीं है, बट यस, वी विल come to the conclusion that it is useful in helping us appreciate the literary sources better. तो limitations का भी आप यहाँ पे सेक्शन एक मेंशन कर सकते हो, एक पैराग्राफ लिख सकते हो, बट इन द एंड आपको कंक्लूजन में वही करना होगा, डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस. दैट्स अ वैलिड पॉइंट, आप यहाँ पे लिमिटेशंस को इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8. Citing appropriate examples, examine the strengths and limitations of foreigners' accounts for reconstructing Indian history. डिमांड क्या है क्वेश्चन का? टू फोल्ड डिमांड है. क्या क्या? स्ट्रेंथ्स एंड limitations of foreign sources for understanding Indian history through examples. पहले किसके बारे में बात करनी चाहिए? वो अच्छा ये सोचो पहले कि what is the note on which you want to conclude the answer. Though there were certain limitations, but foreign sources still remain extremely valuable.
and you can also include certain prescriptions on how to overcome these limitations. तो लास्ट में आपको इस नोट पे कंक्लूड करना है. So what should be the penultimate portion? Should it be the strengths or limitations? जो इसके जस्ट इमीडिएटली पहले आएगा. लिमिटेशंस यहां पे आनी चाहिए. इसका मतलब पहले स्ट्रेंथ्स को आपको इलस्ट्रेट करना होगा, फिर उसके बाद लिमिटेशंस को इलस्ट्रेट करना होगा. What should be the note on which you introduce the answer? क्या बोल सकते हैं कि भाई since antiquity India has been a major source of attraction for foreign travelers, traders, merchants, pilgrims, saints, sages, etc. And they have all recounted their travels across India through vivid pieces of literature in multiple languages. वो ग्रीक में भी है, लैटिन में भी है, चाइनीज में भी है, अरबिक में भी है, फारसी में भी है, etc. So rich body of foreigners' travelogues. अब बताओ, what are the strengths of these travelogues? So, that you were able to connect India to the world part. They have a cross-cultural linking. ठीक है, तो क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस था, कंपैरेटिव अकाउंट दे सकते थे, दैट इज वन स्ट्रेंथ. और बताइए. हाँ, too mundane. So they found things which were interesting from the eyes of a foreigner but were overlooked by the typical Indian intellectual. So they brought awareness about certain aspects of Indian culture, society, religion, philosophy, ritual practices, society, polity, etc., which were overlooked by Indian scholars. और बताइए. ठीक है, तो they did not suffer from the ordinary biases that Indian scholars suffered from, चाहे वो religious bias हो, चाहे patronage bias हो, etc. और अच्छा, एग्जाम्पल्स भी देने होंगे यहाँ पे हर जगह पर, तो कैन यू साइट सर्टेन एग्जाम्पल्स? मेगास्थनीज, हाँ. Said that you were prevalent or slavery or the caste system that I think you were mentioning that there are several वो शॉर्ट कमिंग्स में उसको इंक्लूड करेंगे, राइट? strengths for like स्ट्रेंथ्स एग्जाम्पल्स इनमें. ठीक है, तो ज्योग्राफी, मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी टॉक्स अबाउट इंडियन ट्रेड एटसेट्रा. ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, इवेंट्स के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the writings of Anacicrates, Aristobulus, Megasthenes, etc., they all refer to the Alexandrian invasion of the northwestern portion of the subcontinent. It proves extremely useful in providing a reference point for Indian history. तो Indian history उसके बाद consolidate हो जाता है, डेट मिल जाता है. 324 BC में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, उसके 4 साल के अंदर अंदर Mauryan Empire was established. 321 BC we get the date for the establishment of the Mauryan Empire. उसके पहले इंडिया का जो कॉन्क्रीट हिस्ट्री है दैट रिमेन्स अनसर्टेन. ठीक है, अच्छा, और बताइए. लैंग्वेज, लिटरेचर, इसका डेवलपमेंट, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इंडिया के अक्रॉस, दे हैव बीन रिकॉर्डेड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स हु टुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन सच थिंग्स. अल्बरूनी फॉर एग्जाम्पल, तो उसको साइट कर सकते हैं आप. ऐसे ही फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, रिलीजियस सिस्टम्स, इनके बारे में दे वर एक्सट्रीमली इंक्विजिटिव. साइंस, टेक्नोलॉजी, इसका डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल हुएन सांग की राइटिंग्स इज यू कैन से ग्लोरिफिकेशन ऑफ नालंदा एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एटसेट्रा. उसके बारे में आप बात कर सकते हो. तो बहुत सारी चीजों के बारे में ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. बट
दैट डज नॉट मीन दैट दे आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। किस तरह के लिमिटेशंस के थ्रू सफर करते हैं? कभी कभार बायस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हुएन सांग का प्रो हर्षा बायस, प्रो बुद्धिस्ट बायस था, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशंस, व्हाई? Yes, India is a very vast and populous country. अलेक्जेंडर के साथ जो हिस्टोरियंस आए थे, चाहे वो नियार्कस हो, चाहे एरिस्टोबुलस हो, चाहे एनासीक्रिटीज हो, हाउ डिड दे डिस्क्राइब इंडिया? एज अ कंट्री ऑफ मोर देन 3600 किंगडम्स, ठीक है। अब ये अगर अवेयरनेस लेकर के फॉरेन स्कॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो वुड दे बी एबल टू प्रोवाइड a generalized framework of Indian society, Indian history, Indian culture? नहीं हो पाएगा, and that can lead to generalizations, ठीक है। Secondly, they were foreigners in a new land. They were, उनका एक्सपीरियंस इंडिया में कुछ ऐसा रहा होगा कि आप जब ट्रेन से जाते हो और यू आर इन अ प्लेन, विंडो वाली सीट ली हुई है एंड नीचे आप देख रहे हो द अर्थ इज पासिंग बीनीथ यू, या फिर आपके अक्रॉस खेत खलिहान बिल्डिंग शहर सब क्रॉस होते जा रहे हैं एज यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन। इज दैट अ गुड वे ऑफ डेवलपिंग अ गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड इन विच यू आर विजिटिंग? नहीं, यहाँ पे केवल हाइलाइट्स के ऊपर डिस्टॉर्टेड व्यू मिलेगा, ओवर जनरलाइजेशन मिलता है। सेकेंडली, ईच ऑफ दीज फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू इंडिया विद देयर ओन कल्चरल बायसेस, ठीक है। तो अपने अपने कल्चरल लेंस को लेकर के आए थे। व्हाट दे viewed in India, what they observed in India, उन्होंने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, Megasthenes when he came to India, he did not talk in terms of varna or caste, rather he talked in terms of class, ठीक है। Instead of saying that Indian society was divided into 4 varnas and multiple subcastes and subcastes on the basis of profession, he said that it was divided into 7 classes, hierarchically arranged थे, एंडोगेमी भी होता था उसमें, वो सब होता था, बट कास्ट या वर्ना का अवेयरनेस था ही नहीं उसे। He also says that slavery did not exist in India. Do other contemporary sources match what Megasthenes was describing? उसका उल्टा है। He also misinterpreted the way in which modern administration governed military and the cities. तो military administration, city administration दोनों में कुछ flaws निकले हैं, right? तो इस तरह के flaws possible होते हैं। Further, who was their target audience? Indian people or their native readers? Native readers, उनके खुद के countrymen, ठीक है। In their mind, what was India? India was a distant, exotic land, a land of seers, snake charmers, magic, fabulous wealth. और अगर वो इंडिया की रियलिटी अपने रीडर्स को दिखाते, तो वुड देयर इंटरेस्ट इन इंडिया हैव रिमेन्ड द सेम या फिर डिमिनिश हो जाता? डिमिनिश हो जाता। तो दैट इज व्हाई देयर राइटिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी फुल ऑफ अ नंबर ऑफ एग्जैजरेशंस, ठीक है। कई चीजों को एग्जैजरेट करेंगे, कई जगहों पे झूठ भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेगास्थनीज टॉक्स अबाउट थिंग्स सच एज गोल्ड डिगिंग एंड्स और ह्यूमन बींग्स विद हॉर्न्स ऑन देयर हेड, इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फर्दर, Indian culture, Indian religion, Indian philosophy was very, very different from those other foreign cultures. Okay? And it is not easy to capture the true essence of Indian culture, our religious and spiritual complexities in these foreign languages. उसके लिए उन languages में necessary vocabulary present ही नहीं. There were several things that were lost in translation. एंड सेकेंडली, आपको जो फॉरेन सोर्सेज के थ्रू इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट इज नीदर फर्स्ट हैंड नॉर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. इट हैज अंडरगॉन मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन. तो जो ओरिजिनल हिस्टोरियन है, ओरिजिनल ट्रैवलर है, उसने इंटरप्रेट करके एक बार फिल्टर करके लिखा. देन second generation, third generation historians who were writing about India without ever having visited India, based on the references they found from the writings of these original travelers. Second level of filtration.
ग्रीक से रोमन में ट्रांसलेशन हो रहा है, रोमन से ग्रीक में ट्रांसलेशन हो रहा है, ग्रीक से अरबिक में ट्रांसलेशन हो रहा है, थर्ड डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, देन those classical and medieval works are being interpreted by modern historians who come with their own set of biases. तो बहुत filtered type of picture create होके मिलता है. That is not always going to be objective nor accurate. So these are the limitations that foreign sources can suffer from. Conclusion हमें पता है कि हमें किस लाइन पे करना है कि despite these limitations we can overcome these problems if we are simply aware that such limitations exist. तो उनको uncritically accept नहीं कर लेना है, उनको question करने की जरूरत है. So that is the note on which we should end this particular answer. Clear? Online students? Yes. Problems with translation and interpretation. Good. Elite intellectual perspective मिलता था. Good. Right. So with this, we have covered 8 out of the 10 questions from sources. 2 questions बचे हुए हैं. First is critical examination of Kalhana's Raj Tarangini as a source of Kashmir's political history. And the last one, I think, Shruti literature, utility of Shruti literature. Critically discuss the relevance of Indian Shruti literature as a source of history. तो आपको मॉडल आंसर्स यहाँ पे मिल गए हैं. गो बैक होम, एक बार इनको पढ़ के आइएगा. कल इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं एंड देन we'll move on to the next portion. कल के लिए होगा प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, सॉरी प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री. तो उसमें न्यूलिथिक, कैलकोलिथिक, मेगालिथिक एजेस एटसेट्रा, मेगालिथिक भी कवर कर लेंगे एंड मेगालिथिक, तो ये सब हम उसमें कवर कर देंगे. ठीक है. एनी रीडिंग अपार्ट फ्रॉम द क्लास लेक्चर्स, क्लास नोट्स? अगर पढ़ना चाहते हो तो इग्नू मटेरियल पढ़ सकते हो. Although much of what we have in the IGNU material we have already incorporated in the class notes and lectures. Question answer के थ्रू जो भी बचता है वो सारा कवर हो जाना चाहिए. तो आई डोंट थिंक कि उसके अलावा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. हाँ, अगर कोई एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन है जो आपको क्लास नोट से या फिर लेक्चर से क्लियर नहीं हो रहा है या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिस हो गया है, ओवरलुक हो गया है, तो उसके लिए आप एडिशनल रीडिंग जरूर कर सकते हो. दैट कैन बी ईदर फ्रॉम उपिंदर सिंह और फ्रॉम द इग्नू नोट्स. ठीक है. तो उसको सप्लीमेंट्री सोर्सेस की तरह यूज करिए, मेन सोर्सेस की तरह मत यूज करिएगा. ठीक है. एंशिएंट हिस्ट्री का? अच्छा, कब पब्लिश हुआ है? मैंने क्योंकि पढ़ा नहीं हुआ है ना, तो मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ आपको. आप एक बार लेके आ जाइएगा, देख लेते हैं उसको कि कैसा है कि नहीं. हाँ, बेस आपका यही रहेगा क्योंकि देखो, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट that we should be able to answer 100% of the questions with 100% accuracy. We should be able to answer 70% of the questions with 100% accuracy and 30% of the questions with 70% accuracy. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर परफेक्शन के पीछे भागना जरूरी होता है, लेकिन टू थिंक दैट यू विल एवर बी एबल टू अचीव इट, वो नहीं ठीक रहेगा. वो अप्रोच भी गलत हो जाता है फिर. ठीक है. चलिए देन, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर फॉर नाउ. बाकी के 2 क्वेश्चंस कल की क्लास में, और कल के क्वेश्चंस तो कल करेंगे ही करेक्टली. चलिए, थैंक यू. One question, how to answer this specific question on historiography. The current practice of characterization of early modern India is based on a shift from old imperialist periodization of Muslim India, British India, to the more secularist one of medieval India, modern India, which puts Indian history in a universalist chronological structure. Critically evaluate. अब ये क्वेश्चन हमने बिना डायरेक्टली आंसर करे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं इसको. इफ यू लुक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, एसेंशियली वो यही वाला क्वेश्चन ही है. तो वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना होगा,
बाकी का पूरा आर्गुमेंट सेम रहेगा कि भाई शुरुआत यहां से होती है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री से, बाद में ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस लेकर के आते हैं एंशियंट मिडीवल एंड मॉडर्न, बट सेंसिबिलिटी वही कॉलोनियल ही रह जाती है, इट इज ऑल्सो डीपली कम्युनल। इसके बाद आते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हु ट्राई टू गिव अ साइंटिफिक बेसिस फॉर पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन पास्ट। फिर उसके बाद सबऑल्टर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स एंड कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियोग्राफी के ट्रेंड्स इमर्ज होकर के आए हैं। और यहाँ पे हमने देखा क्या है कि अर्ली मॉडर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है इंस्टेड ऑफ मेडिवल मॉडर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? Muslim India, British India to the more secularist one, medieval India, modern India, which puts Indian history on a universalist chronological structure, critically evaluate. Now, ये जो task है, if you look at it, this was done by the nationalist historians. But was the changing of the nomenclature sufficient enough to say that universalist structure के अंडर ले आए हैं? नहीं, that happened much later. कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट का पार्ट है वो। दैट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। ठीक है, ऑल राइट देन, एनीथिंग एल्स? हाँ जी। क्या एग्जांपल्स थे ना सर, जैसे हाउ टू रिकलेक्ट देम, काफी सारे एग्जांपल्स हो गए। हाँ, डिफिकल्ट हो जाता है रिकॉल करना बाद में। अब वो रिकॉल करने का तरीका आपका ये है कि इफ यू रिमेन डिपेंडेंट ऑन द एग्जांपल्स आई प्रोवाइड ना, तो नहीं हो पाएगा। आपको खुद उनको डेवलप करने पड़ेंगे, अपने खुद के एग्जाम्पल्स डेवलप करने पड़ेंगे। फॉर दैट यू वुड रिक्वायर डायमेंशनल अवेयरनेस कि भाई कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द रेलेवेंट डायमेंशंस, एंड हर डायमेंशन के लिए आपके पास अपना खुद का बनाया हुआ एक या दो एग्जाम्पल होना चाहिए। वहां पे फिर आपको याद रहने में थोड़ी आसानी रहेगी। एंड आप ये नोटिस करोगे ना दैट same kinds of examples are going to be sufficient for different types of questions. तो क्वेश्चन हो सकता है बदल जाए, लेकिन डायमेंशन सेम रहेंगे, और डायमेंशंस में भी वही 5-6 एग्जांपल्स ही रेलेवेंट रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ट्राई टू डेवलप दिस डायमेंशनल अवेयरनेस। बाकी जो काम है ना, दैट इज सिंपली फिलिंग द गैप्स, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आप घर जाओ, टेबल बनाओ एक कि भाई कौन कितने डायमेंशन होंगे, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन हिस्टोरिकल चेंज को अप्रिशिएट करने के लिए। आप चाहते हो तो उसको सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन, फिलोसफी, एडमिनिस्ट्रेशन, मोनेटाइजेशन, इन सारे डायमेंशंस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन एग्जाम्पल्स पिक करिए हर एक पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफिकल डायमेंशन से या पॉलिटिकल डायमेंशन से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं, मिल सकते हैं हमको। हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होने के बाद महाजनपद पीरियड में या फिर लेटर वैदिक एज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, मॉडर्न पीरियड के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, गुप्ता पीरियड के, पोस्ट गुप्ता पीरियड के, एटसेट्रा। तो हर डायमेंशन में हर पीरियड के लिए एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स पिक कर लीजिए। एंड आपको ये ब्लाइंडली नहीं करना है। टेक अ लुक एट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अपीयरिंग, एंड उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो रिलेवेंट एग्जांपल्स हैं, पिक दोज वंस ओनली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ब्लाइंड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो कि करते जा रहे हो, बिकॉज दैट वुड लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंशन। तो इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग आप और कॉम्प्लिकेट कर दोगे उसको। यू शुड हैव अ गुड डायमेंशनल अवेयरनेस, बट ऑल्सो अ गुड अवेयरनेस ऑफ द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड। ये करो तो फायदा होगा। एंड प्लीज यूज द एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इससे बहुत ज्यादा परे नहीं होंगे आपके एग्जाम्पल्स, हो सकता है एक आध यूनिक एग्जाम्पल्स आ जाए, बट दीज आर द काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि आपको हर आंसर कॉपी में देखने के लिए मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आंसर में भी होने चाहिए। तो यूज दिस एग्जाम्पल्स, पिक सम न्यू वंस। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको खुद से ये करना पड़ेगा एक्सरसाइज। दैट इज वाई यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक आपने खुद से प्रॉब्ली सेम एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है। जब खुद करोगे तो इंटरनलाइज हो जाएगा, यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। ठीक है, चलिए दिन, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, कल मिलते हैं।